Hello and welcome everyone. Is my voice clear and audible? Anchi, clear and audible. Okay, thank you so much, sister. So we'll begin with a short meditation. Sit back comfortably. Withdraw your attention from the outside world and bring it to yourself. Now bring to mind the concept of pure loving relationship. Imagine connection with others that are free from judgment, expectation, and condition. Envision relationships where love flows freely, without attachment or possession, where individuals support and uplift each other without trying to change or control. Now reflect on your own relationship. Notice where you may be holding on to expectations or judgments. Allow yourself to let go of these limitations and instead cultivate a sense of acceptance and understanding. Remember, pure loving relationships are not about finding the perfect person, but about being the perfect presence. Being present, kind, and compassionate. Take a deep breath in, and as you exhale, repeat to yourself, I am love, I am light, I am a source of pure loving relationships. Allow the truth of these words to sink deeply into your being. Feel the sense of connection, joy, and peace that arises from embracing pure loving relationships. Okay, thank you so much. So we'll begin with today's session. I'll just share the screen with you. Okay. So yesterday we were at the end of chapter six. No, at the end of chapter seven, sorry. And we were just understanding the different portals to connect to the unmanifested. And at the last, we have started the portal of death. Okay. So I'll just continue from here. Approaching death and death itself, the dissolution of the physical form, is always a great opportunity for spiritual realization. This opportunity is tragically missed most of the time since we live in a culture that is almost totally ignorant of death, as it is almost totally ignorant of anything that truly matters. ऑथर कह रहे हैं कि ये पोर्टल हम मोस्ट ऑफ द टाइम मिस कर लेते हैं जो
जो डेथ के बारे में कह रहे हैं कि it is one of the last portals that we can experience our own beings, we can experience the divine is at the time of death. But author वही समझा रहे हैं कि in most of the people even this is they don't get the realization even at death because किसी को भी वो अभी भी सबके माइंड में ना वो ignorance है डेथ को लेके people are so engrossed in this world that they don't seem to think or imagine what death is. Every portal is a portal of death, the death of the false self. And this is also a very important line. जो भी portal है, it's the death of the false self. Death of the false self as in जो हमारा mind controlled ego mind है उसका death है what we identify ourselves to, this false self, this mind body, our relationships, जो भी externally है, and it's the realization of the true inner self. Every portal is the death of the false self and the realization of our true inner self. When you go through it, you cease to derive your identity from your psychological mind made form. You then realize that death is an illusion, just as your identification with form was an illusion. The end of illusion, that's all that death is. It is painful only as long as you cling to illusion. हर पोर्टल जो जैसे हमने ये चैप्टर में पढ़ा, हर पोर्टल में हम ये रियलाइज करते हैं कि हमारी हर जो आइडेंटिटी जिससे हम अपने आप की हमने पहचान बना रखी है दिस नेम फॉर्म द सोसाइटी वे वी लिव इन, हमारे आसपास जो है हमारे रिलेशनशिप्स, हर चीज से जिससे भी हम आइडेंटिफाई करते हैं वो सारे इल्यूजन्स हमारे ब्रेक होते हैं. एंड एज जैसे जैसे इल्यूजन्स हमारे टूटते हैं, we start realizing and being aware of our true inner self, our true inner being, our pure self, our soul. So that is what, और what is death is an illusion, वो भी फिर हमें illusion ही लगने लगता है. But वो painful है as long as हम उस illusion के साथ अपने आप को identify करते हैं. Okay, so now we are going on to the next chapter. Chapter 8, Enlightened Relationships. Enter the now from wherever you are. I always thought that true enlightenment is not possible except through love in a relationship between a man and a woman. Isn't this what makes us whole again? How can one's life be fulfilled until that happens? Is that true in your experience? Has this happened to you? तो वो जो स्पीकर है वो ऑथर से पूछ रहे हैं कि उनके हिसाब से उनको लगता है कि जो ट्रू एनलाइटमेंट है, जो ट्रू लिबरेशन है, दैट इज when there is love between a man and a woman, that makes you feel complete. So the author is asking the speaker कि is it true in your experience? आपके साथ ये ऐसा हुआ है? तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या ये सच है? The speaker is saying, not yet, but how could it be otherwise? I know that it will happen. In other words, you are waiting for an event in time to save you. This is not the code error that we have been talking about. Salvation is not elsewhere in place or time. It is here and now. तो अगर जैसे सीकर कह रहा है कि उनको कोई रिलेशनशिप में होना है टू फील कंप्लीट, उनके हिसाब से दैट इज द ओनली वे टू फील एनलाइटेंड एंड कंप्लीट. तो ऑथर वही समझा रहे हैं कि अगर हम ऐसा कोई माइंड में हमारी हमने ऐसी प्रोग्रामिंग कर रखी कि व्हेन वी आर इन अ रिलेशनशिप देन वी विल बी कंप्लीट, so then again we are talking about the future, we are not in the present. So that is what the author has been talking about throughout all these chapters in this book. The liberation is nowhere else. It is here and now in the present.
What does that statement mean? Salvation is here and now. I don't understand it. I don't even know what salvation means. Most people pursue physical pleasures or various forms of psychological gratification because they believe that those things will make them happy or free them from a feeling of fear or lack. Happiness may be perceived as a heightened sense of aliveness attained through physical pleasure or a more secure and more complete sense of self attained through some form of psychological gratification. Most of the people, दुनिया में हर किसी को mostly, यही लगता है कि, कुछ physical pleasure से वो अपने जो ये lack है वो complete कर सकते हैं. तो उनको लगता है कि जो एक सेंस ऑफ अलाइवनेस जो एक सेंस ऑफ प्रेजेंस आती है फिजिकल प्लेजर से उनसे वो कंप्लीट होते हैं दे गेट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी वैलिडेशन जो भी आप कह लो टू फील कंप्लीट एंड इनफ. This is the search for salvation from a state of unsatisfactoriness or insufficiency. Invariably, any satisfaction that they obtain is short-lived, so the condition of satisfaction or fulfillment is usually projected once again onto an imaginary point away from the here and now. When I obtain this or am free from that, then I will be okay. This is the unconscious mindset that creates the illusion of salvation in the future. तो ये जो भी physical pleasures हैं जो जिनसे लोगों को लगता है कि they feel complete and enough, these are all very short-lived. तो और ये भी अगेन क्या है इट इज सम प्रोजेक्शन ऑफ द फ्यूचर कि अगर ये मेरे अगर मैं इस रिलेशनशिप में होऊंगा या मुझे ये फिजिकल प्लेजर मिलेगा देन ओनली आई फील द सैल्वेशन द द फीलिंग ऑफ बीइंग होल एंड कंप्लीट. बट ये सब एक टाइम की ही इल्यूजन है फ्यूचर का ही अनकॉन्शियस माइंडसेट है जैसे ऑथर कह रहे हैं. True salvation is fulfillment, peace, life in all its fullness. It is to be who you are, to feel within you the good that has no opposite, the joy of being that depends on nothing outside itself. It is felt not as a passing experience, but as an abiding presence. In theistic language, it is to know God not as something outside you, but as your own innermost essence. यहाँ पे ऑथर समझा रहे हैं कि जो ट्रू सैल्वेशन है जो लिबरेशन बोलो आप सैल्वेशन कह लो वो क्या है दैट इज when you feel complete without anything external जब आप internally ही उसको experience करते हो. When you know it is the feeling of being connected to the divine is your own innermost essence. That is what is salvation. जब आपने कुछ भी बाहर नहीं ढूंढना अपने अंदर ही उसे एक्सपीरियंस करना है वो पीस वो फुलफिलमेंट वो डिवाइन लव सब कुछ जब आप इंटरनली एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज व्हाट salvation is. True salvation is to know yourself as an inseparable part of the timeless and formless one life, from which all that exists derives its being. तो रियल लिबरेशन सैल्वेशन क्या है जब हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हम कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड है विद द डिवाइन. हम उससे अलग है ही नहीं हम ये माइंड बॉडी फॉर्म नहीं है. वी आर द इनर बीइंग, the inner soul that is formless, nameless. That is what is true salvation. Okay. True salvation is a state of freedom from fear, from suffering, from a perceived state of lack and insufficiency, and therefore from all wanting, needing, grasping, and clinging.
It is freedom from compulsive thinking, from negativity, and above all, from past and future as a psychological need. Your mind is telling you that you cannot get there from here. तो यहाँ पे ऑथर क्या समझा रहे कि ट्रू सैल्वेशन और फ्रीडम क्या है तो दैट इज देन देयर इज फ्रीडम फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ फियर सफरिंग ये जो एक माइंड की नीड होती है या वांट होती है या कोई रिलेशनशिप में जाने की जब उन सब चीजों से हम फ्री हैं दैट इज व्हाट इज ट्रू सैल्वेशन जब हमारे माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, when we are completely in the present, when we are, completely soul conscious, constantly connected to the divine, that is when we experience true salvation. Something needs to happen, or you need to become this or that before you can be free and fulfilled. तो माइंड हमें बार बार क्या कहता है कि नहीं और कुछ चाहिए जब ये रिलेशनशिप में जाऊंगी तब आई बी कंप्लीट माइंड बार बार हमें यही कहता है कि कुछ और चाहिए टू फील कंप्लीट यू आर नॉट कंप्लीट it is saying in fact that you need time that you need to find sort out do achieve acquire become or understand something before you can be free or complete. You see time as the means to salvation, whereas in truth, it is the greatest obstacle to salvation. हमें लगता है कि थोड़ा और टाइम के बाद जब हमें ये मिल जाएगा देन वील बी फ्री बट वो उससे क्या होता है वो दैट इज द मेन ऑब्स्टिकल बिकॉज हम एक फ्यूचर इल्यूजन में जी रहे हैं. You think that you can't get there from where and who you are at this moment because you are not yet complete or good enough. But the truth is that here and now is the only point from where you can get there. You get there by realizing that you are there already. हमें कुछ और चाहिए नहीं हम ऑलरेडी वो है. We are complete, we are pure, loving, full of नॉलेज मतलब ब्लिस वो सब हम ऑलरेडी हैं हमें कहीं जाना नहीं है या हमें वो किसी के साथ रह के नहीं मिलने वाला दैट इज ऑलरेडी हियर एंड नाउ वी आर ऑलरेडी कंप्लीट. You find God the moment you realize that you don't need to seek God on the line. You find God the moment you realize that you don't need to seek God. हमें God को कहीं समझना नहीं है कहीं ढूंढना नहीं है. We are already connected to the divine constantly. So the moment we realize कि हमें कहीं बाहर नहीं ढूंढना है that is when we actually experience the divine love. So there is no only way to salvation. Any condition can be used, but no particular condition is needed. However, there is only one point of access, the now. There can be no salvation away from this moment. You are lonely and without a partner. Enter the now from there. You are in a relationship. Enter the now from there. अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो भी आप प्रेजेंट में हो आप कंप्लीट हो. अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी यू आर कंप्लीट. तो किसी की जरूरत नहीं है टू फील कंप्लीट. There is nothing you can ever do or attain that will get you closer to salvation than it is at this moment. This may be hard to grasp for a mind accustomed to thinking that everything worthwhile is in the future. Nor can anything that you ever did or that was done to you in the past prevent you from saying yes to what is and taking your attention deeply into the now. You cannot do this in the future. You do it now or not at all. तो कोई भी पास्ट का बैगेज जिसको हम होल्ड ऑन करते हैं वो भी हमें प्रिवेंट नहीं कर सकता टू एक्सपीरियंस द नाउ. और कोई फ्यूचर का इल्यूजन भी हमें प्रिवेंट नहीं कर सकता. हम अभी इस वक्त
प्रेजेंट में रह सकते हैं, सोल कॉन्शियसनेस फील कर सकते हैं, अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं. इट इज नथिंग टू डू विद पास्ट एंड फ्यूचर. नथिंग कैन प्रिवेंट us being in the present. Okay. Love-hate relationship. Unless and until you access the consciousness frequency of presence, all relationships, and particularly intimate relationships, are deeply flawed, and ultimately dysfunctional. This may seem perfect for a while, such as when you are in love, but invariably that apparent perfection gets disrupted as arguments, conflicts, dissatisfaction, and emotional or even physical violence occur with increasing frequency. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑथर समझा रहे हैं कि अनलेस एंड अनटिल यू एक्सेस द कॉन्शियसनेस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेजेंस, मतलब जब तक आप प्रेजेंट में नहीं हो, जब तक आप ये इल्यूजनरी माइंड आइडेंटिफाइड हो, टिल द टाइम यू आर आइडेंटिफाइड विथ योर egoic mind, you cannot find a pure loving relationship. मतलब आप थोड़े टाइम के लिए एक्सपीरियंस करेंगे दैट यू आर इन लव, बट उसके बाद क्या होएगा, जब ईगो माइंड विल टेक ओवर, तो वही आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट, रिजेंटमेंट, एंगर, कई कई केसेस में तो इवन फिजिकल वायलेंस होता है. It seems that most love relationships become love-hate relationships before long. Love can then turn into savage attack, feelings of hostility, or complete withdrawal of affection at the flick of a switch. This is considered normal. The relationship then oscillates for a while, a few months or a few years, between the polarities of love and hate, and it gives you as much pleasure as it gives you pain. It is not uncommon for couples to become addicted to those cycles. Their drama makes them feel alive. मतलब ये क्या होता है जब हम ये लव रिलेशनशिप्स में आते हैं, व्हेन वी आर नॉट इन प्रेजेंट एंड वी आर कंप्लीटली माइंड आइडेंटिफाइड, ईगोइक माइंड से रन है, तो वो इनिशियली जो बहुत लविंग रिलेशनशिप होता है, वो इट डजंट टेक लॉन्ग टू बिकम लव हेट रिलेशनशिप. तो वही होता है कि एक्सट्रीम हो जाता है ऑफ लव एंड हेट. तो उससे क्या होता है, वो माइंड आइडेंटिफाइड होता है और उनको लगता है दिस इज व्हाट, दिस ड्रामा ऑफ लव एंड हेट रिलेशनशिप इज व्हाट इज कीपिंग देयर रिलेशनशिप अलाइव. तो जितना वो प्लेजर एक्सपीरियंस करते उतना ही पेन भी एक्सपीरियंस करते हैं. When a balance between the positive negative polarities is lost, and the negative destructive cycle occurs with increasing frequency and intensity, which tends to happen sooner or later, then it will not be long before the relationship finally collapses. So initially, जब वो balance होता है between pleasure and pain, positive and negative, तो जब वो ज्यादा negative की तरफ जाने लगता है, then what happens is जब फिर क्या होता है, फिर तो रिलेशनशिप इज गोइंग टू एंड इवेंचुअली. क्योंकि इनिशियली तो ठीक है, प्लेजर है, पेन है, बोथ दोनों का बैलेंस है, बट जब वो पेन इंक्रीज होता रहता है, जब वो नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, दैट्स व्हेन इवेंचुअली द रिलेशनशिप एंड्स. It may appear that if you could only eliminate the negative or destructive cycles, then all would be well and the relationship would flower beautifully. But alas, this is not possible. The polarities are mutually interdependent. अब ऑथर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो, अगर आप आप सोचो कि आप नेगेटिव साइकिल्स को हटा दो, बट वो होता नहीं है, दैट वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वो प्लेजर और पेन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. यू कैन नॉट हैव वन विदाउट द अदर. The positive already contains within itself
the as yet unmanifested negative. Both are, in fact, different aspects of the same dysfunction. I am speaking here of what is commonly called romantic relationships, not of true love, which has no opposite because it arises from beyond the mind. जो true love है, that arises beyond the mind. ये जो ऑथर जिस बारे में बात करे वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स है, वो शॉर्ट लिव्ड है, वो कुछ समय का जो हम ये ब्लिस फील करते हैं, दैट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू लव, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो थोड़े टाइम का प्लेजर होता है और उसके बाद पेन तो होना ही है, हाउ द ऑथर हैज एक्सप्लेन कि दे आर इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हमें प्लेजर फील हो रहा है कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप में, तो पेन भी ऑटोमेटिकली फील होगा ही होगा। बट ट्रू लव तो जो है, दैट arises from beyond the mind, that is what the inner being is, that can only be experienced and felt, and it's a continuous state. Love as a continuous state is as yet very rare, as rare as conscious human beings. Brief and elusive glimpses of love, however, are possible whenever there is a gap in the stream of mind. So, love basically, this feeling of love is something that is continuous. जब जितना जितना हम अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्टेड रहेंगे, द फीलिंग ऑफ लव विल जस्ट नेचुरली फ्लो फ्रॉम अस। और फिर वो एक या दो लोगों के साथ नहीं होगा, या जो फ्यू पीपल जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं, दैट इनर सोल लव इज फॉर ईच एंड एवरी सोल, दैट इज व्हाट सोल लव इज, एंड दैट इज कंटिन्यूअस। बट वो एट द मोमेंट बहुत रेयर है, बिकॉज वो सिर्फ ब्रीफ इंटरवल्स के लिए होता है, व्हेन वी आर नॉट आइडेंटिफाइड विद आवर माइंड, व्हेन वी आर सोल कॉन्शियस, दैट्स व्हेन वी फील दैट एक्चुअल प्योर लव. The negative side of a relationship is, of course, more easily recognizable as dysfunctional than the positive one. And it is also easier to recognize the source of negativity in your partner than to see it in yourself. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो नेगेटिविटी हमें अपने पार्टनर में दिखती है, वो ज्यादा इजीली हम देखते हैं, बहुत कम होता है जो हम अपने आप में जो गलतियां ढूंढते हैं. वी यूजली ऑलवेज लुक एट द नेगेटिव्स इन आवर पार्टनर. It can manifest in many forms: possessiveness, jealousy, control, withdrawal, and unspoken resentment. The need to be right, insensitivity and self absorption, emotional demands and manipulation, the urge to argue, criticize, judge, blame, or attack, anger, unconscious revenge for past pain inflicted by a parent, rage and physical violence. जब ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, तो वो unspoken resentment, anger, physical violence तक भी, it can start getting into a very toxic relationship. जब हम एक जब हम नेगेटिविटी देखना शुरू करते हैं अपने पार्टनर में, तो बहुत वेज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी हो सकता है. On the positive side, you are in love with your partner. This is at first a deeply satisfying state. You feel intensely alive. Your existence has suddenly become meaningful because someone needs you, wants you, and makes you feel special. And you do the same for him or her. When you are together, you feel whole. The feeling can become so intense that the rest of the world fades into insignificance. तो जो हम ये लव सोचते हैं, जो इनिशियली एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हम फील करते हैं, तब वो इतना ज्यादा हमें स्पेशल लगता है. हमें लगता है कि जब हम उनके साथ हैं, देन ओनली वी आर कंप्लीट एंड वी आर फुलफिल्ड एंड वी आर होल.
तो फिर ऐसा होता है ना कि उसके उस इंसान के अलावा उस रिलेशनशिप के अलावा हमें और कुछ नहीं दिखता इन द वर्ल्ड बिकॉज वी गेट सो engrossed in that one particular relationship that we feel everything is getting manifested just through that one relationship, that one romantic love relationship. However, you may also have noticed that there is a neediness and a clinging quality to that intensity. You become addicted to the other person. He or she acts on you like a drug. You're on a high when the drug is available, but even the possibility or the thought that he or she might no longer be there for you can lead to jealousy, possessiveness, attempts at manipulation through emotional blackmail, blaming and accusing, fear of loss. If the other person does leave you, this can give rise to the most intense hostility or the most profound grief and despair. ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं रिलेशनशिप्स में। एक तो जो वो नीडीनेस और क्लिंगिंगनेस वांटिंग दैट पर्सन टू बी विथ यू 24/7 वो फीलिंग कि बस एक उनके साथ ही हम कंप्लीट होंगे उनके अलावा हमारी दुनिया में और कोई है ही नहीं। तो जब वो एक वो पोजेसिवनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा पोजेसिवनेस, वो फियर ऑफ लूजिंग द पर्सन, उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है कि समथिंग हैपेंस इन द रिलेशनशिप या वो डाउनफॉल आता है रिलेशनशिप में एंड द पर्सन लीव्स यू, तो इट कैन लीड टू द मोस्ट प्रोफाउंड ग्रीफ, जैसे ऑथर कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा फिर वो ये इंसान डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि पूरा उन्होंने अपनी जो लाइफ है उस पर डिपेंडेंट कर दी है, उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप पे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि ये सब माइंड क्रिएटेड जस्ट it's not actually love. It's very important to understand and withdraw from these mind identified emotions. In an instant, loving tenderness can turn into a savage attack or dreadful grief. Where is the love now? Can love change into its opposite in an instant? Was it love in the first place, or just an addictive grasping and clinging? Love has no opposite. It's not जो हम कहते हैं ना love का opposite hate है. Love is just love, pure love. Pure love का कोई opposite नहीं होता. It Pure love is just that eternal feeling जो बहुत कम experience होती है। बाकी जो हम love समझते हैं, that is just a possessiveness, an attachment, expectation, वो सारी चीजें को हम love समझने लगते हैं, but it's not actually love. Addiction and the search for wholeness. Why should we become addicted to another person? The reason why the romantic love relationship is such an intense and universally sought after experience is that it seems to offer liberation from a deep seated state of fear, need, lack, and incompleteness that is part of the human condition in its unredeemed and unenlightened state. There is a physical as well as a psychological dimension to this state. क्यों लोग इतना रोमांटिक लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, क्यों उनको एक और पार्टनर चाहिए टू फील कंप्लीट? बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि एक इस पार्टनर के साथ होने से दे कैन फील दैट एनलाइटमेंट, फील दैट लिबरेशन, जो वो वैसे फील नहीं करते क्योंकि उन्होंने वो अपने अपने आप की अवेयरनेस तो उन्हें हुई नहीं है ना। सो दे ट्राई टू फाइंड दैट सेंस ऑफ लिबरेशन विद अ पर्टिकुलर पर्सन इन अ रिलेशनशिप। उनको लगता है कि उनके साथ होने से ही वो कंप्लीट होंगे और रहेंगे। On the physical level, you are obviously not whole, nor will you ever be. You are either a man or a woman,
which is to say, one half of the whole. On this level, the longing of wholeness, the return to oneness, manifests as a male female attraction, man's need for a woman, woman's need for a man. It is an almost irresistible urge for union with the opposite energy polarity. The root of this physical urge is a spiritual one, the longing for an end to duality, a return to the state of wholeness. तो ये भी अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो अर्ज होती है फॉर अ मैन फॉर वुमेन टू बी इन कनेक्शन विद अ मैन एंड वाइस वर्सा इज बिकॉज वो फीलिंग होती है कि बाय बीइंग टुगेदर वो they'll be complete, the feeling of oneness, the feeling of wholeness. But ये actually feeling is a spiritual one. ये जो feeling है, it is actually to be connected with ourselves to feel complete. तो ये जो urge होती है जैसे author समझा रहे it is actually a spiritual one. Sexual union is the closest you can get to this state on the physical level. तो ये बहुत deep understanding इसको करने के लिए चाहिए कि uh, every person wants to feel complete and whole. And if they are not aware of their true self, they are not aware of what completeness is. So उनके लिए, that is the physical level पे connected होना ही completeness है. This is why it is the most deeply satisfying experience the physical realm can offer. That sexual union is no more than a fleeting glimpse of wholeness, an instant of bliss, as long as it is unconsciously sought as the means of salvation. You are seeking the end of duality on the level of form where it cannot be found. You are given a tantalizing glimpse of heaven, but you are not allowed to dwell there and find yourself again in a separate body. तो ये जो experience है जिसपे वो completeness feel होता है ऐसे लगता है कि we are complete, but it is very short lived. It's just a fleeting glimpse, just for a moment. So that is what the author is explaining over here. Okay, so we'll end, I think, over here, and we'll start आगे का फिर कल से continue करेंगे. Okay, thank you so much for joining the session today. We'll see you all tomorrow. Thank Thank you. you, sister, for the session and wonderful explanation. Thank you so much, sister.